Friends, today I am addressing you on the new policy announced by the Government of India regarding vaccine boosters or booster doses of vaccine. Friends, I would like to say, and the words might sound strong, but they are an understatement for what is happening by the Government of India. The selling of booster dose vaccines for the age group 18 to 60 by private companies and entities has exposed the cruel, the cunning and the callous nature of the BJP government in the new policy announced now. The decision on privatization of booster vaccine is bitter, it is brutal and it is barbarous. And unfortunately, the central feature of this new policy is discrimination by design. True and accurate. Can you continue? I'll do it by reference to a few simple questions and points. In fact, the points I'm going to tell you will show that this designed discrimination is quite incomprehensible. It is absurd and it is based upon disparity and segregation between the poor and the rich, between the rural population and the urban or semi-urban ones. So friends, my first question is, the policy is for 18 to 60 years age group to get booster vaccine upon payment through private entities only. So my first question is, the booster on the private sector will cost minimum of 600 rupees. And as we have already experienced, any private entity administering it will charge at least 200 additional rupees to give you the injection. So roughly 800 rupees per person per booster dose is the cost imposed in this new policy. My second question is, virtually every country appears to have a booster free. Bangladesh, our neighboring country is Pakistan, a country as large and powerful in India, is not giving free boosters. I am not talking of developed countries. There nobody will imagine that booster is being charged for. But countries much smaller, much poorer, much less empowered and resourceful than us, if they are not charging for booster, how on earth can the Government of India suggest that roughly 800 rupees per person per booster is to be charged? And I give you the example of Bangladesh and Pakistan. There are many more countries. Number 3, why administer this booster dose only through private hospitals and have no option of getting it through government hospitals? Does it make sense to you? Is this a reasonable policy? Government hospitals will not deal with this 18 to 60 category. Number 4 is related to the first 3. Does it not create immediately two classes of vaccine booster dose persons, the haves and the have-nots? The rich and the poor. The persons who can afford 800 rupees per booster versus those who cannot. The group of people in rural areas, large genuine swathes of rural territory, who even if they want to give 800 rupees, do not have the facility nearby to utilize that 800 rupees to go to a private hospital and get it done. So what is the tuk? What is the tark? What is the rationale behind this absurd and incomprehensible policy?
My point number 5, you have already hit out in the solar plexus of the middle class and the common man by the double whammy of huge unemployment and incredible price rise. And just yesterday I gave you the figures of price rise. In the middle of all this, you are forcing people who would be in very specific and dire need of booster to spend 800 rupees per booster at a private hospital for large parts of rural India where there is no private hospital available with this kind of coverage or this kind of facility. Are you suggesting that you do not care for the rural population? Are you suggesting that you do not bother about the less privileged and the ones who do not, even if they have the money, do not have the facility nearby? I did a very simple, and that's my 6th point, back of the envelope calculation. Now I am not saying the calculation is right, we will take alternative figures. 18 to 60 years age group would have roughly 60 crore adult population, roughly. I may be wrong, it could be 50 crores, it could be 65 crores. But on 60 crores population, at 800 rupees per booster, the private hospital sector stands to gain roughly 48,000 crore rupees. If you are booster vaccinating 60 crore adults from 18 to 60 years of age group. Let us assume that in the next 6 months you are able to do half of that. Then you are getting 24,000 crores, that is half of 48,000 crores, 1,000 crores, in the hands of the private sector hospitals. Should the government be discharging its duty in this manner by transferring the buck? Is this fair? Is this segregation? Is it creating two Indias? Is it creating discrimination? What is the sense behind this absurd policy after already the price levels at which we are standing? So friends, I would demand every citizen to raise his voice on this completely mindless policy. I would demand from the Government of India course correction immediately. Let them have this option at the minimum in government hospitals. Let them reduce this figure, gigantic figure according to me, either to 0 or to a very minimalistic figure. Let not this private profiteering continue unabated, and let not jumlas take the place of reality. Otherwise, this decision would be continued to be called, it is only 1 day old, socially unethical, morally corrupt and institutionally untenable. दोस्तों, आज हम वैक्सीन बूस्टर डोज के विषय में संक्षेप में बात करेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको संबोधित किया अंग्रेजी में, मेरा विनम्र निवेदन ये है कि ऐसा सौदा स्वास्थ्य का कैसे कर सकती है मोदी सरकार? स्वास्थ्य का ऐसा सौदा कैसे कर सकती है मोदी सरकार? महंगाई वैक्सीन बेचकर खड़ी है, गरीब अमीरों के बीच में एक खड़ी की है दीवार। और मैं इसको आपको बताऊंगा कि ये दीवार कैसे बनाई गई है। आज ये समझ नहीं आ रहा है कि महंगाई वैक्सीन से सरकार निजी सेक्टर और निजी अस्पतालों को करने दे रही है महामारी में मुनाफाखोरी, महामारी में मुनाफाखोरी। और इसके कुछ बिंदु मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं, जो किसी भी आयाम पर समझ भी नहीं सकते, उनको जस्टिफाई करना तो दूर की बात है, समझ ही नहीं आ सकते, इतने अजीबोगरीब हैं। लेकिन सबसे पहला और मुख्य आयाम है कि ये दीवार बनाता है गरीब और अमीर के बीच में, ये दीवार खड़ी करता है। चाइनीज गुड्स तो आपने बैन कर दी, लेकिन चाइनीज वॉल्स बना रहे हो आप। ग्रामीण भारत और अर्बन भारत के बीच में, शहरी भारत के बीच में ये दीवार खड़ी करता है,
जिनके पास सुविधा है निजी अस्पतालों की और जिनके पास ये सुविधा मीलों तक नहीं है। क्यों है ऐसा? आप इन 4-5 बिंदुओं पर ध्यान दें। 18 से 60 वर्ष के लोगों के लिए आपने नीति बनाई जिसकी अभी घोषणा की है, जिसमें आप पेमेंट के आधार पर बूस्टर वैक्सीन ले सकते हैं। जैसा कि हमारे पिछले कुछ वर्षों का अनुभव रहा है, लगभग बूस्टर वैक्सीन का न्यूनतम खर्चा 600 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति बूस्टर होगा। मैं ये निचला फिगर ले रहा हूँ, कम फिगर ले रहा हूँ। उसमें जोड़िए लगभग न्यूनतम 200 रुपया और, क्योंकि कोई भी निजी अस्पताल उसके बिना आपको इंजेक्शन नहीं लगाएगा। ये भी मैं न्यूनतम फिगर ले रहा हूँ, तो कम से कम 800 रुपये का एक बूस्टर मिलेगा आपको। अब 800 रुपये का बूस्टर कोई इतनी कम रकम नहीं है जो भारत के हर व्यक्ति को उपलब्ध है। नंबर 2, भारत के हर व्यक्ति अगर खर्चा करना भी चाहें तो बहुत बड़े बड़े इलाके हैं भारत में जहां निजी अस्पताल अवेलेबल नहीं है, और जहां अवेलेबल हैं वहां उनके पास ये सुविधा नहीं है कि बूस्टर दे सकें। नंबर 3, आपने कोई विकल्प नहीं रखा कि आप सरकारी अस्पताल में जाके ये, और दूसरा निःशुल्क या बहुत कम शुल्क पे ले सकें। नंबर 4, क्या इससे आप गरीब अमीर और ग्रामीण और शहरी के बीच में बड़ी कृत्रिम लेकिन सच्ची चीनी दीवार नहीं बना रहे हैं? चीन के सामान को तो आयात आपने बंद करवा दिया, लेकिन चीनी दीवारें आप खुद बना रहे हैं। आज मैंने एक सरल कैलकुलेशन किया है, 18 से 60 की उम्र के बीच में लगभग जो वयस्क लोग हैं वो 60 करोड़ हैं, 600 मिलियन। वो फिगर शायद थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मैं अंदाजन ले रहा हूँ। आप 800 रुपये प्रति व्यक्ति 18 से 60 के बीच में चार्ज करेंगे। बड़ा सरल है, 48,000 करोड़ का ये कैलकुलेशन है। ये निजी सेक्टर को जाएगा, निजी अस्पतालों को जाएगा, 800 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च करेगा। इनकम कितनी भी हो उसकी। इस 48,000 करोड़ में से क्या आप कुछ इस भार को कम नहीं कर सकते थे? क्या सरकारी अस्पतालों में ये विकल्प नहीं दे सकते थे? क्या इस शुल्क को अगर ज़ीरो नहीं तो बहुत हद तक कम नहीं कर सकते थे? और एक अजीबोगरीब बात देखिए आप, जैसा मैंने आपसे कल विस्तृत रूप से संबोधित किया था कि आप पीठ पर भी और पेट पर भी लात मार चुके हैं। एक लात है महंगाई की, दूसरी लात है बेरोजगारी की। महंगाई और बेरोजगारी की डबल लात के साथ साथ आप 800 रुपये प्रति व्यक्ति को निजी अस्पताल में जाके खर्च करने के लिए बाध्य कर रहे हैं बूस्टर डोज के लिए। क्या ये सही है, उचित है, फेयर है? इसका उत्तर मेरे प्रश्न में निहित है। दोस्तों, मैं अंत करना चाहूँगा ये कहकर कि इस महामारी के दौरान मुनाफाखोरी वाली चाल के लिए हर नागरिक को उठ के अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। सीधी, सटीक और सशक्त। सीधी, सटीक और सशक्त। और तुरंत इसमें संशोधन मांगना चाहिए। आदर्श तो ये हो कि इसको ज़ीरो करें, लेकिन बहुत हद तक कम भी कर दें तो भी संशोधन महत्वपूर्ण होगा। आज ये अजीबोगरीब है क्योंकि ये अलग अलग भारत को हिस्से करती है वैक्सीन बूस्टर की उपलब्धि के लिए और एलिजिबिलिटी के लिए। धन्यवाद। सवाल आपके हों कोई? बाकी किसी देश में मुफ्त नहीं है, करीब करीब हर देश में मुफ्त है। आप समझिए, अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश, लाओस, वियतनाम मुफ्त दे रहे हैं तो क्या मैं आपको उदाहरण दूं अमेरिका और इंग्लैंड का?
मैंने जानबूझ के उदाहरण नहीं दिया। वहाँ तो अगर बोल दें आपकी बूस्टर के लिए चार्ज करेंगे तो लोग हंसने लगेंगे आपके ऊपर। लेकिन मैं आपको उन देशों का नाम ले रहा हूँ जो हमारे से तो कोई आंशिक रूप से भी सशक्त नहीं उतरे। तो अब इक्का दुक्का कोई देश में चार्ज होता होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन भारत जैसे विशाल और जिसको आप एक सुपर पावर मानते हैं, बनाना चाहते हैं, वहाँ पर इस पॉलिसी का कोई औचित्य नहीं लगता। एकदम ये लगता है मुझे कि जल्दबाजी में बिना सोचे समझे सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे आप, सिर्फ 800 रुपये देंगे आप, ऐसी बाउंड्री लाइंस क्यों बनाए आपने? हाँ 2 मिनट, ओके विल स्टार्ट नाउ। बताइए सब नॉन बूस्टर के ऊपर कोई प्रश्न है तो। आपके महाराष्ट्र में गठबंधन साझेदार शिवसेना के संजय राउत ने कहा कि मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की साजिश हो रही है, जिसके लिए भाजपा को जिम्मेदार है। और उनका आरोप यह है कि वोट जा सकते हैं, यह कहते हुए कि मुंबई में गैर मराठियों की जो आबादी धीमे धीमे कम हो रही है। देखिए, जो द्वेष, जो बदले की भावना, जो राजनीतिक प्रतिशोध की भावना बीजेपी सरकार ने महाराष्ट्र के प्रति, प्रदेश के प्रति, उनके लोगों के प्रति और वहाँ की अघाड़ी सरकार के प्रति दिखाई है आज 2 वर्ष से, मैं नहीं समझता कि किसी सरकार ने कभी भी, और वो भी केंद्र सरकार और इतने महानुभाव प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जैसे लोगों ने, किसी सरकार के विषय में दिखाई होगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसका कारण बड़ा सरल है। आपने येन केन प्रकारेण यहाँ सरकार बनाने की प्रयत्न किया, अघाड़ी के सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने ठाकरे जी के नेतृत्व, पवार जी के नेतृत्व में उसको असफल बनाया। आप इसको पचा नहीं पाए आज 2 साल बाद भी। आप ग्रेसफुल हार मानने वाले व्यक्ति नहीं हैं, इसलिए आप दुभात से, साम दाम दंड भेद से अलग अलग हथकंडे और चालें चलकर इसको अस्थिर बनाना चाहते हैं। नंबर 3, मैं डिटेल्स पे नहीं कह सकता, राउत साहब से पूछना पड़ेगा आपको, लेकिन मैं कोई भी चाल या कोई भी हथकंडा केंद्र सरकार का रूल आउट नहीं करूँगा। महाराष्ट्र के विषय में कुछ भी कर सकते, कभी भी कर सकते। नंबर 4, अगर ऐसा कोई प्रपोजल भी है तो आप समझ सकते हैं कि ये अगर इतना दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होता तो कितना हास्यास्पद होता। भारत का ऐसा प्रदेश, भारत की वाणिज्य और कमर्शियल राजधानी के विषय में आप ऐसी बात भी करेंगे तो हास्यास्पद नहीं होता। तो ये चारों बिंदु हैं, मैंने बड़ा स्पष्ट आपको उत्तर दिया है। अभी अभी एक खबर आई है ट्वीट में बाय मिस्टर पूनावाला, और ये थोड़ा और भी मजाक की बात हो गई है। अभी तो खैर घोषणा सरकार की तो वही है, और कुछ हद तक मैं समझता हूँ कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस या हमारा जो विरोध कल से चल रहा है इसके ऊपर उसका कोई असर हुआ है। आधार पूनावाला साहब ने ट्वीट किया है कि हमने SII जो उनकी कंपनी है ने अभी, ये कोई 2-4 मिनट पहले की ट्वीट है, 600 रुपये प्राइवेट हॉस्पिटल से संशोधित करके, रिवाइज करके कीमत 225 रुपये प्रति डोज की है। ये मैन्युफैक्चरर का है, अभी तक सरकार की घोषणा नहीं है कि उसके बाद वो अस्पताल कितना चार्ज करेगा और सरकार कितना चार्ज करेगी, वो एक दूसरे। लेकिन आधार पूनावाला की कंपनी ने खुद ने ट्वीट किया, उन्होंने, पूनावाला जी ने खुद ने कहा है कि हमने रिवाइज कर दिया, संशोधन कर दिया 600 से 225 रुपये प्रति डोज। इसका सीधा परिणाम ये है कि जो हम जिस उद्देश्य से, जिस भावना से प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो सही प्रमाणित हुई है, प्रमाणित तो सही हुई है। ये 3:25 का ट्वीट है। ओके, let me answer you in 2 or 3 short pointed points. First point,
I will answer you completely, but it appears that your channel finds no merit in price rise. It finds no merit in boosted vaccine dose prices. It finds no merit in so many other issues of unemployment, but for 3 or 4 days is carrying a continuous uninterrupted campaign on a single issue. One. Two, I think the difference between Congress-ruled state governments and BJP-ruled state governments is that in the latter, the silence of the Prime Minister or the Chief Minister like Mr. Yogi is matched by the clear condemnation by the Chief Minister Rajasthan, by me from this podium on behalf of the Congress Party, by every other stakeholder. We don't hesitate to condemn, whereas you are met by stony-walled silence in the other states of the BJP. Number three, it is the most unfortunate incident, but to attribute it to state-sponsored as some section of the BJP are saying, and which is being liberally emphasized and underlined in your channel, is very misleading, it's provocative, it's divisive, and at least those who claim to be responsible should not telecast such versions. An unfortunate incident happened, people are sought to be apprehended and prosecuted, but to suggest that there is some kind of a encouragement or a blind eye to it is very wrong. Number four and last, I think we should all join together to condemn the incident, to get after the perpetrators, many of whom have already been caught and charged, and stop making simply carrying forward the political campaign of the ruling party through the media.